Hello students, I am Monica Soral from MBA International School, Nayagaon. Today we will be doing the fourth chapter of geography, that is agriculture. Yes, agriculture. India is chiefly agriculture based country whose economy spins around agriculture. Various types of agricultural harvests are produced here by the farmers in different seasons for their livelihood. Indian agriculture depends on vagaries of monsoon. अब देखो ये क्या है, इंडिया का जो टाइप क्लाइमेट है और इंडिया की जो मेन ऑक्यूपेशन है वो एग्रीकल्चर है, वो उसी के अराउंड एग्रीकल्चर के अराउंड ही घूमता है पूरा. टाइप्स ऑफ फार्मिंग इन इंडिया. नाउ व्हाट टाइप ऑफ फार्मिंग इज देयर इन इंडिया? Types of farming, that is, one is commercial farming and the other one is subsistence farming. Commercial farming में क्या होता है, देखो commercial farming में again there are two types of farming, that is mixed farming and plantation farming. Mixed farming means what? Growing of crops and rearing of animals. This comes in mixed farming. मतलब दोनों चीज़ें होती हैं जहाँ पर क्रॉप्स भी ग्रो करते हैं प्लस एनिमल रेयरिंग भी होते हैं, यानी कि पोल्ट्री फार्म और जो कैटल रेयरिंग होती है वो. एंड देन प्लांटेशन फार्मिंग, वन क्रॉप इज ग्रोन इन अ लार्ज स्केल. सिर्फ एक क्रॉप बहुत लार्ज स्केल एरिया होता है जहाँ पर वो ग्रो होती है एंड दैट इज प्रोड्यूस फॉर ग्रोन फॉर द कमर्शियल यूज़. उसको सेल करते हैं हम, जैसे टी है, कॉफ़ी है, दीज थिंग्स आर कमिंग इन द कमर्शियल फार्मिंग. Now intensive farming, subsistence farming में again there are two farmings, that is intensive farming and primitive farming. Intensive farming is practiced in area of dense population, greater input and output. Primitive farming, nomadic farming और zooming. Primitive farming मतलब जो primitive use, the tools which are used are primitive, है ना, old type of tools are used for the farming, that type of farming that is. यहाँ पर ये practice होती है dense population, जहाँ population ज़्यादा होती है और inputs और outputs वहाँ पर ज़्यादा होते हैं, that is intensive farming. Now primitive subsistence farming क्या होती है? Primitive subsistence agriculture is practiced on small patches of land with the help of primitive tools like hoe, digging sticks and community labor. ये पुराने ज़माने में जो अपन लोग टूल्स यूज़ करते थे फार्मिंग के लिए वो होता है, ये प्रिमिटिव में यूज़ होती हैं ये सारी. दिस टाइप ऑफ फार्मिंग डिपेंड्स अपॉन द मानसून, नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल एंड सुटेबिलिटी ऑफ अदर एनवायरमेंटल कंडीशंस टू द क्रॉप ग्रोइंग. यहाँ पर फार्मर्स किस पे डिपेंड करते हैं? मानसून पे. एंड द सुटेबिलिटी मतलब सॉइल के लिए सुटेबल जो एरिया है, फर्टाइल सॉइल जहाँ होगी वहाँ वो ढूंढ के वो ये फार्मिंग में यूज़ होते हैं. व्हेन द सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीजेस द फार्मर शिफ्ट्स एंड क्लियर अ फ्रेश पैच ऑफ लैंड फॉर द कल्टिवेशन. अब जब सॉइल फर्टिलिटी यहाँ पर जब डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है, तो वो एरिया को छोड़ के देन दे गो टू द अदर एरिया, देयर दे स्टार्ट द फार्मिंग. This shifting allows nature to replenish the fertility of the soil through the natural process. Land productivity in this type of agriculture is low as the farmer does not use fertilizers or other modern inputs. अब यहाँ पर क्या है, land fertility, productivity low होती है. Why? Because they are not using anything modern. सब प्रिमिटिव है, इसलिए वहाँ पर जो क्रॉप्स ग्रो होती है ना वो यूटिलाइज होती है ओनली फॉर द पीपल हु आर ग्रोइंग इट, फॉर द विलेजर्स और जस्ट नियर बाय स्मॉल विलेजेस आर देयर दे कैन यूज, बट नॉट फॉर द commercial purpose. And commercial farming, the main characteristics of this farming is the use of higher application of modern inputs, high yielding variety, that is HYV seeds, chemical fertilizers, insecticide, pesticides in order to obtain higher productivity. The degree of commercialization of agriculture varies from one region to another. Commercial farming तो होती है business purpose के लिए, and here they are using the high yield variety of seeds, मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी की जो seeds होती हैं वो यूज़ होती है इस फार्मिंग में, प्लस they are using the pesticides, insecticides so that the crops don't get spoiled. So these are the things used for the commercial farming. Now next we will see intensive subsistence farming. This type of farming is practiced in the area of dense population, यानी कि जहाँ population ज़्यादा है वहाँ पर ये वाली farming practice होती है. Pressure lands. It is labor intensive farming where high doses of biochemical inputs and irrigation are used आर ऑप्टेन फॉर हायर प्रोडक्शन. अब हायर प्रोडक्शन के लिए यू नीड लेबर, क्योंकि वो लैंड बहुत बड़ा है तो वहाँ पर लेबर नेचुरली इट विल बी रिक्वायर्ड ना, और वो कमर्शियल यूज़ के लिए होता है तो वो बहुत बड़ा लैंड एरिया है तो लेबर वहाँ पर बहुत ज़्यादा चाहिए. एंड देन हाई डोजेस ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स भी ज़रूरी है वहाँ पर. दो द राइट ऑफ द इनहेरिटेंस लीडिंग टू द डिवीजन ऑफ लैंड अमंग सक्सेसिव जनरेशंस has rendered land holding size uneconomical, the farmers continue to take maximum output from the limited land in the absence of alternative source of livelihood. यहाँ पर right to inheritance मतलब division of land वो
जनरेशन टू जनरेशन जो चला आ रहा है दैट दे टेक इनटू कंसिडरेशन, और वहाँ पर वो क्रॉप को इस तरह से उगाते हैं कि दैट इट विल बी यूज्ड फॉर मेजर प्रोडक्शन. Now plantation. Plantation is also a type of commercial farming. In this type of farming, a single crop is grown on a large area. ये हमने पहले भी पढ़ा था, single crop on a large area. The plantation has an interface of agricultural industry. Plantation cover large tracts of land, use capital intensive inputs, and labor is proceeded by migrants. यहाँ पर again we need money, lots of money is needed. वो उसको इन्वेस्ट करना पड़ता है क्योंकि वो लार्ज एरिया ऑफ लैंड है, लेबर को देना होता है, तो दैट फॉर दैट वी आर यूजिंग, एंड लेबर इज माइग्रेंट्स. नाउ मेनी ऑफ द पीपल दे माइग्रेट फ्रॉम द डिफरेंट प्लेसेस, द विलेजेस, एंड दे कम टू वर्क ओवर हियर बिकॉज दे गेट द wages over there, good wages they get over here. All the produce is used as raw material in respective industries in India. Tea, coffee, rubber, sugarcane, banana, etc. important plantation crops. These are the important crops over here in India. Since the production is mainly for the market as well, developed network of transport and communication connecting the plantation area, processing industries and markets प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन देयर डेवलपमेंट. अब यहाँ पर जब प्रोडक्शन कमर्शियल है तो नेचुरली वी नीड कम्युनिकेशन, वी नीड ट्रांसपोर्ट, गुड ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन विल बी देयर. देन जो भी प्रोड्यूस अपना हुआ है उसको बेचने में, उसको ट्रेडिंग करने में वी विल बी हेल्पफुल फॉर, सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. Now cropping pattern. Now what is the cropping pattern in India? There are two cropping pattern. One is Kharif and the other is Rabi. And in between it comes the Zaid. Now see, rainy season. Kharif means rainy season. Crops sown onset of monsoon. Monsoon के स्टार्टिंग में जब क्रॉप्स को बोते हैं, सो करते हैं. देन हार्वेस्ट कब होता है उसका? सितंबर टू अक्टूबर. एंड क्रॉप्स ग्रो कौन से होते हैं इसमें? जूट, शुगर केन, राइस, मेज, मिलेट्स. एंड एरियाज वेयर दिस इज डन इज उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, असम, केरला, महाराष्ट्र, एक्सेट्रा. Zaid comes in summer season. This is the summer season. And then comes the Rabi. Rabi comes in the winter season. Now winter season over here, crops sown in October to December, harvested April to June, and crops grown wheat, barley, peas, gram, mustard. Areas Punjab, Haryana, Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Uttarakhand and Uttar Pradesh. These are the places. So this is the cropping pattern in India, Kharif and Rabi, and in between comes the Zaid. Now crops sown, see, short growing, harvested season between April to June. ये जैद का जो है, जैद क्रॉपिंग जो पैटर्न है वो क्या है? क्रॉप्स कब शॉर्ट ग्रोइंग होती है इसमें, एंड हार्वेस्ट कब होती है? बिटवीन अप्रैल टू जून, समर सीजन में. क्रॉप ग्रोन कौन सी है? वाटरमेलन, मस्क मेलन, कुकम्बर, वेजिटेबल्स, फॉडर क्रॉप्स. देखो ये सारी जो गर्मी में जो अपन लोग वाटरमेलन, मस्क मेलन सब गर्मी में मिलते हैं. सो ऑल दीज आर ग्रोन ड्यूरिंग द जैद क्रॉपिंग. एरियाज कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, असम, केरला, महाराष्ट्र, एक्सेट्रा. नेक्स्ट, नाउ विल नो समथिंग अबाउट द मेजर क्रॉप्स ऑफ इंडिया. जो इंडिया में जो मेजर क्रॉप्स यानी कि जो मेन क्रॉप्स ग्रो होते हैं, दैट फूड क्रॉप्स में क्या आता है? सीरियल्स एंड प्लांटेशन क्रॉप्स. सीरियल्स में व्हाट वी गेट? राइस, व्हीट, मिलेट्स, मेज, पल्सेस. एंड प्लांटेशन क्रॉप्स वी गेट शुगर केन, ऑयल सीड्स, टी एंड कॉफी. Here non-food crops are what? Rubber, fiber crops like jute, cotton and silk. ये तो non-food है. Then horticulture. In horticulture crops से fruits and vegetables. Fruits, apples, mangoes, pineapples, guava, walnut, etc. And vegetables, peas, onion, cabbage, tomato, cauliflower. These comes in the horticulture crops. These are the major crops grown in India. Now rice. Rice, it is a staple crop of a majority of the people in India. Majority of people love eating rice. So that is a staple crop. Our country is the second largest producer of rice in the world after China. See, we are the largest after China. It is a kharif crop which requires high temperature above 25 degree centigrade and high humidity with annual rainfall about 100 centimeter. In these areas of less rainfall, it grows with the help of irrigation. This is the rice plantation, how it grows. Development of dense network of canal irrigation and tube wells have made it possible to grow rice in the areas less rainfall such as Punjab, Haryana, West Uttar Pradesh and parts of Rajasthan. अब यहाँ पर rainfall नहीं होती, but because of the canal irrigation, this is helpful over there. So rice can be grown in these areas also. Wheat,
is the second most important cereal. Now wheat तो गेहूँ तो बहुत important है. It is the second most important cereal crop and is grown in the winter season. It requires 50 to 75 centimeter of annual rainfall evenly distributed over the growing season. Millets में क्या आता है? ज्वार, बाजरा, रागी are the important millets grown in India. Though these are known as the coarse grains, they have a very high nutritional value. Maize is a crop which is used both as food and fodder. ये दोनों के लिए यूज होती है. It is a kharif crop which requires temperature between 21 degree centigrade to 27 degree centigrade and grows well in old alluvial soil. Then comes the pulses, यानी कि अपनी दालें जो होती है. India is the largest producer as well as the consumer of pulses in the world. There are the major sources of protein in a vegetarian diet. अब जो vegetarian है, for them this is the protein, source of protein. So sugarcane grows in hot and humid climate. It requires temperature range of 21 degree to 27 degree centigrade and rainfall of 75 centimeter to 100 centimeter. Now what are oil seeds? India is the largest producer of oil seeds in the world. Different oil seeds are grown in covering approximately 12% of the total cropped area of the country. Main oil seeds produced in India are groundnut, mustard and coconut. ये वाले जो तेल हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर खाने में, दैट इज़ ग्राउंडनट मूंगफली का तेल, मस्टर्ड दैट सरसों का तेल जो होता है, कोकोनट यानी कि गोले का जो तेल होता है, दैट वी यूज़ ओवर हियर. एंड टी कल्टीवेशन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर. Tea bushes require warm and moist frost-free climate all through the year. Coffee, India produces about 4% of the world's coffee production. See, these are the things which are produced. These are the crops which we are reading about in India, which we use very commonly. Now others. Mangoes of Maharashtra, Andhra Pradesh, Uttar Pradesh and West Bengal, oranges of Nagpur, bananas of Kerala, Mizoram, Maharashtra, Tamil Nadu, lychee of Goa of Uttar Pradesh and Bihar, pineapples of Meghalaya, grapes of Andhra Pradesh and Maharashtra, apples, pears and apricots and walnuts of Jammu and Kashmir and Himachal Pradesh are well known in the world over. These are the fruits which are well known, and see which fruits are found in which area they have given over here. Horticultural crops, India is the largest producer of fruits and vegetables in the world. Now non-food crops यानी कि जो अपन खाने में नहीं लेते वो है rubber and cotton. It is an equatorial crop but under special condition it is also grown in tropical and subtropical area. Cotton, India is believed to be the original home of the cotton plant. यहाँ पर सबसे बढ़िया cotton plant होता है. Jute, high temperature is required during the time of growth of the cotton plant. Jute plant के लिए high temperature required है. Now Bhudan and Gramdan movement. What was Bhudan and Gramdan? Now Vinoba Bhave spread the awareness about donating surplus land to the landless. This was a precursor of abolition of the zamindari system. zamindari system को हटाने के लिए विनोबा भावे जी ने ये चीज़ शुरू करी थी कि जो लैंडलेस लेबर हैं उनको अपन लैंडलेस पीपल हैं, फॉर देम दे कैन प्रोवाइड अ लैंड, है ना, फ्री में उनको लैंड दिया जाए. द राइट ऑफ इनहेरिटेंस हैड ऑलरेडी रेड टू द फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग नेसेसिटेटिंग कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स. नाउ इनहेरिटेंस मतलब जैसे फादर का लैंड है तो बेटे को मिला, फिर उसके बाद क्या, सो दैट थिंग वॉज देयर. सो दैट इज वाई विनोबा भावे सेड नो, द पर्सन हु इज नॉट हैविंग लैंड शुड बी प्रोवाइडेड विद द लैंड. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया embarked upon introducing agricultural reforms to improve Indian agriculture in the 1960s and 1970s. Green Revolution based on the use of package technology and the White Revolution, Operation Flood were some of the strategies initiated to improve the lot of Indian agriculture. यहाँ पर Green Revolution आने से क्या हुआ, बहुत सारा improvement आया. The people were introduced with new technology of farming. The comprehensive land development program was initiated which included both institutional and technical reforms in the 1980s and 1990s. Kisan Credit Card, KCC, Personal Accident Insurance Scheme, PAIS are some other schemes introduced by the Government of India for the benefit of the farmers.
फार्मर्स के लिए गवर्नमेंट ने बहुत कुछ सोचा, बहुत कुछ करा ताकि more and more people are involved with this agriculture and the farmers will not face any problem. So because that is a very important thing, the crops, growing the crops are very important. So many things were introduced. बहुत ज़्यादा कोशिश करी कि लैंडलेस फार्मर्स को भी लैंड मिल जाए and they can be provided with good quality crops plus the insecticide, pesticide, everything. Present scenario in India, अब अभी का सीन क्या है? The growth rate in agriculture is decreasing in the subcontinent, which is an alarming situation. The people are running away from agriculture क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें उनको नहीं मिल रही हैं. That is why they are tired of this and they are just running away. That is an alarming. अब सभी ख़त्म कर देंगे अगर agriculture farming तो फिर क्या होगा? How will we get food to eat? So this is a major problem. Farmers are withdrawing their investment from agriculture, causing a downfall in the employment in agriculture. The declining of share of agriculture in the GDP is a matter of serious concern because any decline and stagnation of agriculture will lead to a decline in other spheres of the economy, having wider implications for the society. ये तो बहुत major problem है. ये decline हुआ, then everything will be declined. That I told you already. Establishment of the Indian Council of Agricultural Research (ICAR), agricultural universities, veterinary service and animal breeding centers, horticulture development, research and development in the field of meteorology and weather forecast, etc., have been promoted by the government of India. Now, impact of globalization on agriculture. What is the impact of globalization on agriculture? The farmers in India have been exposed to new challenges over 1990, that is post-globalization. This is again the major problem which the people are facing over here in agriculture. Now, impact of globalization will be what? If India will not have a proper cropping pattern, they will have to import the cereals and everything, all the vegetables and everything from the other country, and that will be very bad for the country. We will earn with the export and not the import. So these are the problems India will face. So that is why this thing should be stopped. The government should do something for our country, for the agriculture, so that we don't face any such problem. Thank you.